Are you ready with me? Absolutely, I'm right here with you. Whatever you're eager to chat about, I'm all ears. Uh, so first tell me about what is severe LV dysfunction. Sure thing. So, severe left ventricular dysfunction basically means the left side of your heart is struggling to pump blood effectively. It's often tied to conditions like heart disease or high blood pressure. Now, if you want to explore more of the details, we can definitely do that. Hello everyone, how are you all? Hope you are doing great. So welcome to my new session. So in this session I'm going to talk with AI. So in this session we are going to learn some difference. In this sessions we are going to learn about the severe LBD function. So will teach me. I please wait and watch. So it is an unlimited conversations opportunity for us. So I am going to talk with AI. So we are going to discuss about the severe LBD dysfunctions. So we'll learn some different thing. I please watch the video till the end. Learn small thing and we will try to solve small questions. So in this video we are going to know something different with the AI. So please watch the video till the end. Welcome back, Rahul. Hi, how are you? Hey there, I'm doing great, thanks for asking. Sounds like you're back for another round of conversation, so what's on your mind this time around? Are you ready with me? Absolutely, I'm right here with you. Whatever you're eager to chat about, I'm all ears. Uh, so first tell me about what is severe LV dysfunction. Sure thing. So, severe left ventricular dysfunction basically means the left side of your heart is struggling to pump blood effectively. It's often tied to conditions like heart disease or high blood pressure. Now, if you want to explore more of the details, we can definitely do that. Okay, tell me deeply in severe LV dysfunction, common causes like symptoms and some blood investigation and which some test is there. So what we should to do. Absolutely, let's get into it. So, severe left ventricular dysfunction is typically caused by things like coronary artery disease, long standing high blood pressure, or even heart attacks that weaken the heart muscle over time. In terms of symptoms, we're talking about things like shortness of breath, fatigue, swelling in the legs, which all crop up because the heart's not pumping as well as it should. Now, when it comes to tests and blood work, you'd often start by looking at something like an echocardiogram to really see how the heart's pumping. Blood tests might include checking for things like B-type natriuretic peptide, BNP, which can indicate heart failure. There's also going to be other imaging tests or even stress tests to get the full picture. And once you've got all that info, your doctor can help craft a plan that might include medications, lifestyle changes, or sometimes even devices to help your heart out. So let me know if you want to dive deeper into any of those angles. Okay, can you repeat in Hindi? बिल्कुल ज़रूर। तो बात यह है कि एक गंभीर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन का मतलब होता है कि आपके दिल का बायां हिस्सा उतनी मजबूती से खून पंप नहीं कर पा रहा जितना उसे करना चाहिए। आमतौर पर ये किसी कॉरोनरी आर्टरी की बीमारी, लंबे समय तक उच्च रक्तचाप या दिल के दौरे जैसी स्थितियों से हो सकता है, जो दिल की मांसपेशियों को कमजोर कर देती हैं। लक्षणों में सांस का फूलना, थकान और पैरों में सूजन शामिल है, क्योंकि दिल पर्याप्त पूरी तरह से खून पंप नहीं कर पा रहा होता। टेस्ट की बात करें तो आमतौर पर एक एकोकार्डियोग्राम किया जाता है ताकि दिल की पंपिंग क्षमता देखी जा सके। ब्लड टेस्ट में बीएनपी, बी टाइप नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड जैसे टेस्ट शामिल हो सकते हैं जो हार्ट फेलियर का संकेत दे सकते हैं। फिर आपके डॉक्टर उसी जानकारी के बेस पर दवाइयाँ, लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव या और भी कुछ तरीकों से आपको मदद कर सकता है। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो बेझिझक बताइए। Okay, key symptoms of severe dysfunctions. Yeah, absolutely. So the key symptoms you usually see with severe left ventricular dysfunction are things like shortness of breath, especially when you're active, or even just lying down, fatigue that just doesn't seem to go away, and swelling in your legs and ankles because the heart's not pumping efficiently. So those are the biggies to look out for. Let me know if you want to unpack any of that further. Can you tell me about common causes? Of course. So, when it comes to common causes of severe left ventricular dysfunction, we're usually looking at things like long standing high blood pressure, coronary artery disease where the heart's blood supply is reduced, or previous heart attacks that have weakened the heart muscle. Sometimes it's related to. No problem at all. I'm glad I could help break that down a bit for you. So, let's flip the script a bit. What's something else on your mind tonight?
What is the ejection fraction? Ejection fraction is basically a measure of how well your heart's pumping out blood with each beat. So if you imagine your heart as a pump, the ejection fraction is the percentage of blood that's pushed out of the left ventricle each time it contracts. A normal ejection fraction is typically between about 50 to 70%. If it's lower, that can be a sign of heart dysfunction. So it's a pretty helpful number for doctors to figure out how your heart's doing. Anything else you want to dive into? Okay, can you repeat in Hindi? हाँ बिल्कुल तो इजेक्शन फ्रैक्शन दरअसल ये बताता है कि आपका दिल हर धड़कन के साथ कितनी कुशलता से खून पंप कर रहा है अगर हम दिल को एक पंप के तौर पर सोचें तो इजेक्शन फ्रैक्शन उस खून का प्रतिशत होता है जो हर संकुचन के दौरान बाह्य वेंट्रिकल से बाहर निकलता है आमतौर पर एक नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन करीब 50 से 70% के बीच होता है अगर ये इससे कम हो तो वो दिल की कुछ कमजोरी का संकेत हो सकता है तो डॉक्टर इसे इस्तेमाल करके समझते हैं कि आपका दिल कैसे काम कर रहा है कुछ और पूछना चाहेंगे Okay, tell me about what is pulmonary edema. Absolutely. So pulmonary edema is basically when fluid builds up in the lungs, making it hard to breathe. It often happens when the heart's left ventricle can't pump blood out effectively, causing pressure to increase in the blood vessels of the lungs and fluid to leak into the air sacs. That can lead to symptoms like feeling short of breath, especially when lying down, and a cough that may produce frothy sputum. So if you want to unpack that more, let me know. Yeah, repeat in Hindi. हाँ बिल्कुल तो पल्मोनरी एडिमा का मतलब होता है कि फेफड़ों में तरल जमा हो जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है आमतौर पर ये तब होता है जब दिल का बाया वेंट्रिकल खून को ठीक से पंप नहीं कर पाता जिससे फेफड़ों की रक्तवाहिकाओं में दबाव बढ़ जाता है और तरल हवा की थैलियों में लीक होने लगता है इससे आपको लाइक्टिज्म में दांत फूलना या खांसी आ सकती है जिसमें झाग जैसा बलगम भी आ सकता है अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो बताइए Common uses drug. Sure, so a pretty common class of drugs you might come across are diuretics. They're often used to help reduce excess fluid in the body, especially in conditions like hypertension or heart failure. But there are plenty of other common drugs people use, from antihypertensive to statin. So if there's a particular type you want to explore, just let me know. Okay, diabetics is very necessary for several dysfunctions. They can definitely be pretty important. For someone with severe left ventricular dysfunction, diuretics help relieve the pressure on the heart and lungs by reducing fluid buildup. They're not the only piece of the puzzle, but they're often a key part of the treatment plan to help manage symptoms and improve quality of life. So they do play a necessary role for male folks. Anything else you want to know about? Please repeat in Hindi. जरूर तो हाँ डायरेटिक्स कई डिस्फंक्शंस के लिए वाकई काफ़ी ज़रूरी होते हैं अगर किसी को गंभीर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन है तो डायरेटिक्स हृदय और फेफड़ों पर दबाव कम करने में मदद करते हैं क्योंकि वे शरीर में जमा अतिरिक्त तरल को कम करता है ये कोई अकेला हल नहीं है लेकिन अक्सर ये इलाज का एक अहम हिस्सा होता है ताकि लक्षणों को मैनेज किया जा सके और मरीज की जीवन क्वालिटी बेहतर हो सके तो ये काफ़ी ज़रूरी भूमिका निभाते हैं कुछ और जानना चाहेंगे Yeah, the first priority in severe dysfunction. Absolutely. In cases of severe left ventricular dysfunction, the top priority is often to reduce the strain on the heart and manage symptoms like fluid buildup. That's where medications like diuretics come in, along with other treatments that help the heart pump more efficiently. Basically, the main goal is to keep symptoms under control and improve the patient's quality of life. Anything else you'd like to dig into? Can you identify in the ECG? I can't help with identifying anything from an ECG, but I'm here if you have any other questions or need some general information. क्या ECG में severe dysfunction का कुछ changes रहेगा? हाँ बिल्कुल ECG में अगर किसी व्यक्ति को गंभीर वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन है तो कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं आमतौर पर आप ECG पर QRS कॉम्प्लेक्स के आकार ST सेगमेंट में बदलाव या फिर कुछ और असामान्यताएं देख सकते हैं जो दिल के कामकाज में हो रही परेशानी को दिखाता है अगर आप और जानना चाहते हैं तो बताइए तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए ECG इकोकार्डियोग्राम और CAG अगर हम पहली बात करें कि किस जांच को प्राथमिकता दी जाए तो अक्सर ECG एक शुरुआती स्टेप होता है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है और जल्दी किया जा सकता है इसके बाद इकोकार्डियोग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिल की संरचना और उसकी काम करने की क्षमता को विस्तार से दिखा सकता है और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो CAG यानी कोरोनरी एंजियोग्राफी से और ज़्यादा स्पष्ट जानकारी मिलती है तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता कुछ और पूछना चाहिए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा रहना चाहिए देखिए जब बात नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आती है
तो सबने पहले एक ऑर्गेनाइज्ड और पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच रखना जरूरी है। मतलब कि पेशेंट की सुरक्षा, उनकी केयर की कंटिन्यूटी और साफ साफ कम्युनिकेशन रखना बहुत अहम होता है। अच्छी नर्सिंग का मतलब होता है कि आप एक भरोसेमंद माहौल बनाएं, कोलैबोरेटिव रहें और हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। तो इस तरह की जिम्मेदारी निभाते हुए आप पेशेंट्स को बेहतर केयर दे पाएंगे। कोई और बात करनी है? ओके, पेशेंट का एक्सरसाइज के आज हम लोग क्या किस तरह का हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं? जरूर। जब किसी मरीज को एक्सरसाइज के लिए एजुकेट करना हो तो सबसे पहले उसकी हालत, उसकी क्षमता और डॉक्टर के निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए। फिर आप उन्हें धीरे धीरे शुरू करने की सलाह दे सकते हैं, कैसे हल्की स्ट्रेचिंग या वॉकिंग से शुरुआत करें। उन्हें समझाएंगे कंसिस्टेंसी और धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाना कितना जरूरी है। इस तरह से वो अपनी रिकवरी में कॉन्फिडेंट रहेंगे। कुछ और बताना चाहेंगे? Which type of food we can advise to the patients who are suffering from severe dysfunction? Sure. So for patients dealing with severe left ventricular dysfunction, you really want to start with gentle, low-impact activities and just keep it really gradual. It's all about pacing. Just a little bit of walking, maybe some stretching, and the key thing is to listen I'm to their telling body. about food. Ah, gotcha. We're talking about food. For patients dealing with heart issues like severe left ventricular dysfunction, it's really helpful to lean into a diet that's heart healthy. Think Mediterranean style. Lots of fruits, veggies, whole grains, lean proteins like fish, and of course keeping an eye on salt intake to manage fluid retention. It's all about keeping things balanced and heart friendly. Anything else you're curious about? अगर पेशेंट का सिवियर डिस्पेंसर्स है, वो पेशेंट का ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड हो गया, ऐसा कौन सा सिचुएशन हो सकता है? अगर किसी मरीज को सिवियर एलवी डिस्फंक्शन में चलते फ्लूइड ओवरलोड हो जाए तो इससे दिल पर काफी ज्यादा दबाव पड़ने लगता है। इस स्थिति में हार्ट फेलियर के लक्षण बढ़ सकते हैं, जैसे सांस फूलना, पैरों की सूजन या थकान बढ़ना। ऐसे में मरीजों को अक्सर अतिरिक्त दवा या कभी कभी हॉस्पिटल में एडमिट करके फ्लूइड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ सकती है। कुछ और जानना चाहेंगे इस बारे में? इसके मैनेजमेंट के लिए ऐसा कौन सा स्टेप लेना चाहिए? बिल्कुल। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले यह है कि मरीज को नमक और पानी का इंटेक संतुलित मात्रा में रखना होगा, यानी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की सलाह दी जाती है। इसके अलावा डॉक्टर अक्सर ड्यूरेटिक्स या दूसरी दवाइयाँ देते हैं जो शरीर में जमा एक्स्ट्रा फ्लूइड को कम करने में मदद करती हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो रेगुलर फॉलोअप और मॉनिटरिंग भी काफ़ी ज़रूरी है, ताकि मरीज की हालत को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। अगर आपको और भी जानना है तो बताइए। If the patient is in severe dysfunctions, can we administer any inotrope to improve the patient's condition? Absolutely. So in cases of severe LV dysfunction, inotropes can definitely play a role. They can help boost the heart's pumping ability and improve cardiac output, especially in acute or critical situations. Of course, it has to be closely monitored by the medical team to balance the benefits and any potential side effects. So yeah, inotropes can definitely be part of the toolbox. Anything else you're curious about? Which inotropes will prefer for the improve the patient's severe dysfunctions? Well, when it comes to choosing an inotrope for severe dysfunction, often doctors lean towards something like dobutamine or milrinone. These meds can help give the heart a bit of extra squeeze and improve cardiac output in a controlled hospital setting. It's really about tailoring it to the patient's specific needs and keeping a close eye on how they're responding. So those are a couple of common choices. Anything else you'd like to dive into? How the dobutamine will work for the severe LV dysfunctions? Dobutamine is actually a pretty common go-to for severe LV dysfunction, and it can definitely help by increasing the contractility of the heart. It's like giving the heart a little extra strength to pump better. Usually it's used in a monitored setting, like an ICU, to make sure everything's stable. So yeah, it's a well-established option. Anything else you're wondering about? Okay, can you tell me about the severe LV dysfunction may causes of a heart attack or cardiac arrest? Sure. So severe left ventricular dysfunction, LV dysfunction, can indeed be a contributing factor to both heart attacks and cardiac arrest. Essentially, when the left ventricle, the heart's main pumping chamber, can't pump effectively, it reduces the blood flow throughout the body. Over time, this can strain the heart muscle and make it more vulnerable to acute events. Some of the primary causes of severe LV dysfunction are related to underlying heart conditions like coronary artery disease, high blood pressure, or previous heart attacks that have damaged the heart muscle. When the heart is weak in this way, it struggles to maintain normal rhythm and blood flow, which can ultimately lead to serious events like a heart attack, or even cardiac arrest if the heart can't keep up. It's a chain reaction where long-term LV dysfunction weakens the entire cardiac system. So it's definitely something that needs careful management and monitoring to prevent these kinds of complications. Let me know if you want to dig deeper into any part of that. Okay, repeat in Hindi. हाँ,
बिल्कुल। जैसा मैंने दबाया, गंभीर एलवी डिस्फंक्शन से दिल की कार्यक्षमता कमजोर हो जाती है और इससे हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थितियां होने का जोखिम बढ़ जाता है। अगर आप चाहें तो मैं और भी विस्तार से बताऊं। यह जरूर विस्तार से बताइए। हाँ जरूर। तो देखिए, जब लेफ्ट वेंट्रिकल यानी दिल का मुख्य पंपिंग चेंबर कमजोर हो जाता है तो वो शरीर में ब्लड को ठीक से पंप नहीं कर पाता। इसकी वजह से दिल पर लगातार दबाव पड़ता है और धीरे धीरे वो और कमजोर होता जाता है। इसका नतीजा ये हो लगता है कि दिल की धड़कन असामान्य हो जाए या अचानक से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो जाए। इसलिए ऐसे मरीजों की सही देखभाल और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है ताकि दिल को उन नुकसान से बचाया जा सके। कुछ और पूछना चाहेंगे? क्यों इकोकार्डियोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है अगर पेशेंट को सीवियर एलवी डिस्फंक्शन है तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए? हाँ बिल्कुल सही सवाल है। इकोकार्डियोग्राम दरअसल एक बहुत ही जरूरी टूल है क्योंकि इससे डॉक्टर को दिल की संरचना और इसके काम करने के तरीके को बहुत साफ साफ देखने में मदद मिलती है। खासकर अगर गंभीर एलवी डिस्फंक्शन है तो इको से पता चल जाता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल कितना कमजोर है, पंपिंग क्षमता कैसी है और कई वाल्व्स में तो कोई समस्या नहीं है। इसके आधार पर फिर सही इलाज और मैनेजमेंट प्लान बनाना आसान हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत अहम है। कुछ और जानना? ओके, थैंक यू, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं आप। सो विल टॉक लेटर विथ न्यू कन्वर्सेशंस। Of course, we can definitely pick this up another time. It's been great chatting with you, and I'm always here whenever you want to dive back into this or anything else. What else can I do for you today? Okay, bye. You got it. I'll let you go then. Take care, and if you ever want to chat again, just give me a shout. Bye for now.